Hello all, I am Vikrant Bhosale. Today we are going to discuss second essay topic of section A. The topic is supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Now let's focus on some of the keywords that you should target in order to expand the topic. The first keyword you should target is war. Now here you can take literal meaning of the war, but you can expand it into conflict or disagreement also. Then here you have to focus on this phrase, enemy without fighting. What does it mean? So it could mean many things, say diplomacy, communication, negotiation, and you can add. Now again you have to focus on why aspect. Where will you focus here? Supreme art. Then you have to explain why is it supreme art, how is it supreme art, and once you chalk out the reasons, then you have to support these reasons by giving what supports the reason, where it supports the reason, and what are the examples that you can get from history. That's how you develop the structure. Okay, now subdue is another keyword. Subdue का मतलब है winning over or making partner, or overcoming differences. So see, many a times it is said that in UPSC exam, the answer of the question lies in the question itself. Once you focus on all these keywords, you likely develop the structure of the potential essay. Now let's go for introduction aspect. In introduction, you have to focus on mainly 3 to 4 things. First is how will you open up your essay topic. Whether you will use quote, there are multiple quotes that are connected with the topic known as war, disagreement, conflict, communication, understanding. I'll give you a list of some relevant quotes towards the end of session. Will you start with anecdote of war and peace? So you can use Mahatma Gandhi's idea of non-violence, or the Cuban Missile Crisis, where war was avoided through diplomacy. So even story or current affair incident or historical incident is a good starting point. Now, once you have decided how to open up the discussion, next is explain the quote. So this quote basically belongs to Sun Tzu's statement, and it emphasizes that the greatest victory is not through destruction but through strategy, wisdom, foresight. Why? Because it prevents bloodshed. So as you start thinking about the topic, you will be able to unravel many dimensions of it. How many of you read about Sun Tzu's The Art of War? If you have read, and if you haven't read, say, you can at least read the summary of the book, and you will find this principle, one of the principles embedded in that book. Now, relevance. Once you open the topic, once you explain the quote, then go for relevance, means connect it to today's world. Now here, there is every chance to open up many dimensions, which you are going to explain further. So it could be, say, politics, it could be international relations, it could be business competition, or even personal conflict. इसमें ये जो core message है इस topic का, how is it relevant, how can we explain, that you need to think in your introduction itself.
So these are some of the pointers which will give an idea to the reader that what you are going to discuss. Now this all should translate into the thesis statement. Thesis statement, as I told you before, is like a main idea which you are going to prove throughout the essay by giving various arguments, why aspect, how aspect, and to support it through relevant examples. So what could be thesis? You can give another thesis as well, but this is the one thesis I think more apt, more relevant to the essay. True strength lies not in brute force, but in winning without violence. Now this is important. This is a rephrasing of the phrase that we have used in the essay topic, that subduing enemy without fighting. So again, what you are doing basically in your thesis statement, you are rephrasing the phrases given in the topic itself. Now, again, here you are giving pointers where you are going to discuss all of this. One is instances of war, number one. Second, being a civil services exam, as I told you earlier, talk about governance wherever possible and relevant. Third, in case of businesses, how businesses, instead of engaging into destructive conflict, how they cooperate with each other. And finally, personal life, where human relationships flourish through cooperation, negotiation, communication rather than conflict. So ये आपका thesis statement reader को एक idea देगा how your essay is going to develop. But now, this essay is not purely current affair essay or based on current events, even though it appears so. It has also some philosophical message. So, whenever developing body idea, start with philosophical foundation of the idea. So, you can refer to Sun Tzu's Art of War, okay, where he says that it should be last resort, where quotes like the best fight or best war is the one which never happens, such quotes can be used. And the ultimate skill is to outmaneuver without battle. So you have to avoid the battle. That is what Sun Tzu says. Eastern philosophy में भी इसके कुछ ideas है, जैसे Taoism में they talk about balance and harmony, not conflict. गांधी की अहिंसा or Buddhist middle path also coincide with the message. So you can refer to it as well. Western thoughts में भी ये quote आप use कर सकते हो. War is continuation of politics by other means. So यहाँ focus war के ऊपर है, but how war plays a role in diplomacy ये भी आपको help करेगा. But इसमें acknowledgement ये भी है that destruction is costly. अब ये जो है war is necessary sometimes, ये आप बहुत बार काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी यूज कर सकते हो. काउंटर आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन के पहले आते हैं, जस्ट इसके बारे में भी आपको सोचना है और इसका रिबटल भी देना है. सो हम ये एंड में देखेंगे. सो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्यों देना है? बिकॉज यू वांट टू गिव क्लैरिटी अबाउट द आइडिया दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर थ्रू वेरियस एग्जांपल्स एंड आर्ग्यूमेंट. So it is a nice strategy actually. In any essay, you have to give clarity as to some particular phrases and their origin. Next. Now some historical illustrations which explain the idea. First is strategic deterrence. So Cold War nuclear deterrence is a part of that. Both sides avoided direct conflict. Even military strategies like Alexander the Great's strategy, use of alliances and psychological warfare. Here you can give example of King Puru, to whom he defeated, but later on he forged an alliance with him. Okay, ये incident भी आप use कर सकते हो. चाणक्य statement also. चाणक्य स्टेट क्राफ्ट और चाणक्य ने जो कहा था कि अगर आपका एनिमी आपसे ज्यादा पावरफुल है तो उसको सबड्यू कैसे करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो इस एक्सप्लेनेशन में, हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस में.
और क्या आ सकता है, डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज आ सकती है, जैसे हमने पहले लिया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आप पहले नहीं लेते हो तो इसको बाद में लाओ मेन बॉडी में और एक्सप्लेन करो अच्छे से। देन हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका वेयर अपार्थाइड वाज eliminated through negotiation and reconciliation. इसमें नेल्सन मंडेला's example stands out. Okay, so please make sure that you mention him. Then Gandhi's freedom movement leadership in India, where mighty British Empire was subdued without an army. Then Martin Luther King Jr.'s approach थ्रू सिविल राइट्स मूवमेंट एंड ऑल, ये भी एक इंस्टांस है जहां आप कह सकते कि वॉर वाजंट नेसेसरी टू अचीव द विक्ट्री। एप्लीकेशन, अब ये जो हम सजेस्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के थ्रू, इसका करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या एप्लीकेशन है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। सो इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट इज पावर ऑफ डिप्लोमेसी। सो हियर यू कैन मेंशन वेरियस फोरम्स लाइक G20, G7, क्वाड, ये फोरम आप मेंशन कर सकते हो, वेयर डिफरेंट अलायंसेस आर देयर, इकोनॉमिक सैंक्शंस आर यूज्ड टू प्रिवेंट वॉर और टू सबड्यू दोज हु कमिट रॉन्ग थिंग्स। देन देयर आर यूनाइटेड नेशंस फोरम, इंटरनेशनल लॉज आर देयर which prevent misuse of power. Some institutions are there. Then various peace treaties are signed between different nations which eliminate the possibility of war. This Indo-China border tensions were largely managed through negotiation, Doklam-like conflict. Politics and governance में mainly you can talk about how opposition is won over through dialogue. Then how they are taken on board while framing various policies. इसमें आप मेनली इंडियन एग्जांपल देना चाहते हो तो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल जो हुआ था, इसमें एक्सेप्ट वन पार्टी all parties were on board, and that was a classic example how cooperation happens across the party for certain cases. ठीक है, ये एग्जांपल आप ला सकते हो। Then business and economics में corporate wars are won not by destroying competition but by through innovation. Okay, so इसको भी expand करो। Partnership के बारे में बोलो, how different corporates come together and build the empire. And better customer service, ये अलग अलग aspect business और economics में आप डाल सकते हो rather than cutthroat competition. पर्सनल एंड सोशल लाइफ में भी आप कह सकते हो कि ट्रू रिलेशनशिप हैपन व्हेन वी एम्प्लॉय परसुएशन, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन एंड वी एम्फसाइज ऑन विनिंग रिस्पेक्ट रादर देन शोइंग डोमिनेंस। अब ये जो अलग अलग डायमेंशन आप अनफोल्ड कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, इट इंडिकेट्स द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ योर थॉट वर्ल्ड। सी, let me again repeat the same thing, that your essay has to be a reflection of your personality. It shows not only your knowledge and your understanding, but it also shows the kind of values that you possess, what kind of different dimensions that you try to address in a particular topic. Now ethical and moral dimension क्या है, why diplomacy or winning enemy without fighting is necessary. तो इसके लिए ethical and moral arguments भी है। एक argument ये है, violence breeds more violence, so non-violent solutions are preferable. Here you can use Gandhi's quote, eye for an eye makes whole world blind. ये quote आप use कर सकते हो, which is very apt here. Then moral superiority का भी मैटर है। Okay, this is what strategy used by Gandhi in freedom struggle. Through non-violent means, he tried to assert moral superiority of Indians over British. Earlier, British had tried to told Indian that they are superior to Indians and ruling Indians is their burden. They used to call it white man's burden. But Gandhi countered it by using non-violent means and showing that Indians are rather superior to British because they are using non-violent means. So it gives you moral authority. It also builds or focuses on human dignity. Why? Because people who are non-violent, who believe in constructive ways of doing things, are trusted more than people who use dominance and violence. So trust is necessary for coexistence. And all these aspects
go into explaining why it is best. ये जो हमने देखा था पहले टॉपिक को डिकोड करते वक्त, why it is the supreme art of war, why it is the best, all these ethical and moral aspect, explain why aspect. काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, वो भी आपको देखना है, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस आउट योर एसे. दिस इज द साइन ऑफ हेल्दी इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स that you are also taking into account opponent's view. So first is, some situation may require force. So there are certain situations where diplomacy doesn't work. For example, World War II against fascism highlights that, or self-defense against aggression. That is also allowed by law. So ये भी आप कह सकते हो. Second argument ये भी दे सकते हो that appeasement diplomacy may be treated as a sign of weakness. So it may embolden those who commit violence, they are aggressors. तो ये हुआ हिटलर के बारे में, okay, in World War I, and that resulted into World War II. Balance is necessary. ये भी आप काउंटर आर्गुमेंट है कि सिर्फ आप डिप्लोमेसी से रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, कभी कभी वॉर को भी रिसोर्ट करना पड़ता है. दैट्स हाउ बैलेंस इज अचीव्ड. सो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है. अब इसको थोड़ा सा रिबटल भी देना है, ठीक है. इवन दो सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स हैव सम मेरिट, आपको इसको रिबटल भी देना है, ठीक है. तो रिबटल कैन बी गिवन इन अ मल्टीपल वे. जैसे ये जो है कि आप कह सकते हो कि यस फोर्स इज नेसेसरी, बट देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन वेयर फोर्स इज नेसेसरी एंड वेयर शुड नॉट. रादर वी शुड नॉट यूज फोर्स वेयर डिप्लोमेसी कैन वर्क. हियर आप ये कह सकते हो कि दैट अपीजमेंट इज समथिंग एल्स व्हाइल डिप्लोमेसी इज समथिंग एल्स. सो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोमेसी एंड अपीजमेंट. हियर आप कह सकते हो कि बैलेंस इज नेसेसरी, बट दिस शुड नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट टू प्रोपोगेट द वॉर. ऐसे कह के इस काउंटर आर्ग्यूमेंट को जिसमें सम मेरिट है उसको रिबटल देना है आपको. देन लेट्स लुक एट कंक्लूजन. कंक्लूजन ऑब्वियसली सेम मेथोडोलॉजी. रीस्टेट द कोर आइडिया जो आपने पहले एम्फसाइज किए हैं उसको ही रिफ्रेज करना है अलग लैंग्वेज में. हाईलाइट करंट रिलेवेंस. सो न्यूक्लियर एज है अभी, है ना. आवर कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन हैज इंक्रीज्ड. सम कंट्रीज आर वेरी न्यूक्लियरली पावरफुल. देन साइबर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, रिमोट प्लेस में बैठ के लोग एक दूसरे को खतरा बन बैठे हैं. तो इस एज में डिप्लोमेसी वर्क्स बेटर. क्लोज विथ द फिलोसॉफिकल फ्लरिश. सो दिस कुड बी वन वे दैट wars may achieve the temporary victories, but peace builds civilization. The true warrior is one who conquers without shedding blood. So यहाँ आप building civilization यानी long term के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो ये भी हो सकता है. See, देखो there are various ways to conclude. So it could be one way that you are ending with some quote or philosophical reflection. You can also end with by highlighting contradiction between the example that you cited in the introduction and how it could have gone wrong had there been no diplomacy. जैसे अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करते थ्रू डिप्लोमेसी तो क्या होता, इसका भी रिफ्लेक्शन देके यू कैन क्रिएट अ विविड इमेज. ओके, देन सम रिलेवेंट एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किए. एडिशनल आप ये ले सकते हो. फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इज अनदर एग्जाम्पल. हाउ विदाउट वायलेंस, विदाउट बीइंग फायर्ड, शॉट फायर्ड और सिंबलाइजिंग हाउ पॉपुलर रेजिस्टेंस, डिप्लोमेसी, ऑल दीज थिंग्स ये इस एग्जाम्पल में आ सकते हैं. कोल्ड वॉर का भी हमने लिया था पहले एग्जाम्पल, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है. देन another example is India's freedom struggle under the leadership of Gandhi, how it was largely without too much violence or bloodshed, and how it could help us in long term establish cordial relation with the United Kingdom. Then Nelson Mandela and apartheid, ये भी हमने डिस्कस किया था, इसको आप रिलेवेंट जगह यूज कर सकते हो. यहाँ मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, इनके लाइफ के ऊपर एक मूवी बना है, वो भी आप देख लो. उसका नाम है इनविक्टस, ठीक है. सो वॉचिंग सच मूवीज ऑल्सो प्रोवाइड यू एम्पल मटेरियल फॉर एसे राइटिंग. सो एनी डायलॉग और इंसिडेंट फ्रॉम दैट मूवी कैन बी वेरी गुड हियर. ओके, देन कोट विच वी कैन यूज एट वेरियस प्लेसेस. जैसे ये पहला कोट देखो, रोनाल्ड रीगन का है. पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट बाय
पीसफुल मीन्स. सो ये पीसफुल मीन क्या है? अगेन डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, है ना. यहाँ आप ये भी कोट यूज कर सकते हो. ये कोट हमने पहले देखा है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. गांधी जी का कोट है ये. देन नेल्सन मंडेला, इफ यू वांट टू मेक पीस विथ योर एनिमी यू हैव टू वर्क विथ योर एनिमी, देन ही बिकम्स योर पार्टनर. सो जहां हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं वहां आप नेल्सन मंडेला का कोट ला सकते हो. पीस कैनॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग. सो जहां निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की बात कर रहे हैं, वहां भी ये कोट यूज कर सकते हो. सो इन एन एसे you can use 3 to 4 quotes wherever they are relevant. So examples, quotes, anecdotes, stories, these are useful stuff. Even you can bring it from fiction. So Mahabharata में एक story है that before Mahayuddha of Mahabharata, Krishna went to Kauravas to get at least 5 villages. कि आप उस पर रिफ्लेक्शन दे सकते हो एंड में कि अगर वो विलेजेस दिए होते तो महाभारत का एंड कैसे होता. So again, it provides a food for thought. So देखो friends, in my opinion, there is no particular way of writing essay. There are multiple ways of writing one essay topic. It up to you कि कितने क्रिएटिवली आप सोच रहे हो, कितना अलग अलग मटेरियल आप ला रहे हो जो पब्लिक डोमेन में है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है और जिसको आप रिलेवेंट बना के यहाँ डाल सकते हो. एंड अगेन योर राइटिंग शुड हैव utmost clarity, a flow, a structure. There should be smooth transition between passages. There should be a clear message that you want to deliver, and there should be a sort of philosophical reflection through that message. So अगर आप ये सब लाते हो खुद के ऐसे में, I think it is going to work a wonder and it will help you to fetch wonderful marks. So thanks a lot for your patient listening. We will shortly come with explanation of third essay topic. Thank you.